Good evening, students. How are you all? Yes, I'm also fine. So everyone revise about the last part. Median beta which we have completed. So homework we have completed. Formulas दिए थे. होमवर्क दिया था ना बड़ा मैंने. होमवर्क कर्षा. नहीं दिया था होमवर्क मैंने. ओके तो तुम लोग बड़ा आ जाना. सारे फॉर्मूलाज बड़ा लिख डालना. Write all the formulas बड़ा based upon mean, median बड़ा. फॉर्मूला बुक एक सेपरेट ही मेंटेन करना. चलो. Now let me start with the third average, which is been called to be as which is been called to be as mode, which is being called to be as mode. The third average, which is been called to be as mode. And now when we are going to start with this third average,
which is being called to be as what a mode. So in that case, we should know in the real terms what is mode. What is the mode? Third average, which is been called to be as what a mode, represented by using MO or capital Z. So now when we are going to start with this third average, which is being called to be as mode. So see what are the key points with respect to mode is mode is defined mode is defined to be as that value of a variable. Mode is defined to be as that value of a variable which repeats for maximum time. Which repeats for maximum time. Maximum time, but the value of a variable which repeats for the maximum time. It has been called to be as the mode. Out of all the given averages, out of all the given averages, mode is considered to be as the simplest average. Mode is considered to be as the simplest average because it is easy to calculate. Mode is considered to be as the simplest average because it is easy to calculate. So here in this case, the plus point of studying but a mode is a mode is easy to calculate. Mode is easy to calculate. And now, apart from that, we can also say that for every advantages, there are some disadvantages. And that disadvantages is a mode is not considered to be as a unique. Mode is not considered to be as a unique. And there are two reasons which supports that why the mode is not considered to be as a unique. Why the mode is not considered to be as a unique. And that two reasons are number one, the mode it may or may not exist. Mode it may or may not exist. And number two is whenever the mode exists, whenever the mode exists, it may have more than one value. It may have more than one value. And because of that reason, we can say that the mode is not considered to be as a unique. चलो भाई मुझे फटाफट बताओ कि by listening to this point what you will say a mode is not considered to be as a unique. बताओ on that basis what is the conclusion? Can we say that mode is a good average? Mode, whether it can be considered to be as a good average? बराबर no, mode is not considered to be as a good average because mode का कोई गारंटी ही नहीं है मोड का कोई गारंटी ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट होगा या नहीं ऐसा समझ ले चाइना का माल है मोड, कोई गारंटी नहीं है एग्जिस्ट हुआ तो
हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो बेटा इट इज वेल एंड गुड। अब नहीं हुआ तो बेटा इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, मैं भी क्या कर सकता हूँ मैडम, कोई भी कुछ कर सकता है इसमें मैडम, कोई भी स्टूडेंट इसमें कुछ भी कर सकता है मैडम। मोड का कोई गारंटी नहीं है मैडम, मोड एग्जिस्ट हुआ तो हुआ, बेटा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसका कोई गारंटी नहीं है। Therefore, mode is not considered to be as a good average. Mode is not considered to be as a good average. चलो, apart from that, चलो, apart from that, mode is the average which cannot undergo, which cannot undergo for the further mathematical treatment. Mode is the average which cannot undergo for the further mathematical treatment. Mode is the average which can be represented graphically, which can be represented graphically by using histogram. Histogram is a graphical representation which can be used, which can be used for representing mode. But a median is the average which can be represented graphically. Say the given statement is a true or false. Median is the average which can be represented graphically. Tell me what is the name of, yes, very good, it is true. What is the name of that graphical representation is? Correct. That is by using ogives. बेटा मुझे बताओ ogives they are of how many types? Correct. Two types. One is less than type, and other one is of beta more than type. And the point where the two ogives beta intersect each other is called to be as. Correct. Beta. It is called to be as beta median. Very good. Beta. It is called to be as beta median. Next, beta arithmetic mean can be represented graphically. Arithmetic mean no. Very good. Beta. Apart from that, beta, you can study one more point. That is, you can study with one more point is the mode it can be obtained. Mode it can be obtained by using four methods. Mode can be obtained by using four methods. By using four methods, and that four methods are number one is the inspection method. Number two is the grouping method. Number three is the
empirical relation method, and number 4 is formula method. Total, there are 4 methods which have been used for representing mode. Mode can be obtained by using 4 methods. Out of which second method जो मैंने बताया तुम लोग को, which is called to be as the method of grouping, which is called to be as method of grouping. बेटा ये अपने पास अवेलेबल नहीं है मैडम, दिस इज नॉट अवेलेबल, ये अपने सिलेबस में नहीं है मैडम, ये मैंने तुम लोग को बताया है. दिस आई हैव एक्सप्लेन बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये अपने सिलेबस में बड़ा अवेलेबल नहीं है. तो जब मैंने तुम लोग को बड़ा पढ़ाने के टाइम की पॉइंट्स बड़ा पढ़ाने के टाइम जब मैंने तुम लोग को बड़ा एक्सप्लेन किया, ए मोड इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है कि नहीं, और व्हेनेवर इट मे एग्जिस्ट इट मे हैव मोर देन वन वैल्यू. तो बड़ा वो टाइम पे तुम्हें मुझे डाउट पूछना चाहिए था, जो तुम लोग तो मुझे पूछा नहीं मैडम. अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर कैसा डाउट, कि बड़ा अगर सर आप हमें ऐसे एग्जांपल्स दो जिससे हम लोग को पता चले कि सर कौन से सिचुएशन में मोड एग्जिस्ट हो सकता है एंड कौन से सिचुएशन में मोड एग्जिस्ट नहीं होगा. तो वो एग्जांपल्स हम लोग को चाहिए सर, ऐसे डाउट्स पूछने चाहिए ना तुम लोग को. तो कोई बात नहीं, अब मैं क्वेश्चंस पढ़ा यहाँ पे बोलूंगा, तुम लोग मुझे उसका आंसर देने की ट्राई करो सब लोग. Suppose if the given data is 6, 8, 10, 8, 15, 18, 20. So in that case, चलो मुझे बताओ what is the mode of the data is. What is the mode of the data is. सब लोग बड़ा आंसर बोलो. The mode of the data is 8. Very good. Suppose if the given data is 9, 12, 27, 33, 46, 68. भाई बताओ what is the mode of the data is. अक्षिता ये रॉन्ग. अक्षिता मैंने देख लिया, तूने आंसर धाप लिया है. अक्षिता तूने धाप के आंसर बोला है 9. फिर तूने आंसर चेंज करके बोल दिया नथिंग करके. तो यार इन दिस केस तुम लोग चेक कर सकते हो कि मैंने जब तुम लोग को जब क्वेश्चन पूछा था तो तुम लोग ने देखा था कि सारे के सारे जो वैल्यूज है वो सिर्फ एक ही बार आए थे. एक भी वैल्यू ज्यादा नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट नहीं हुआ था. इसलिए ये देखो, दिस इज अ सिचुएशन वेयर वी कैन से दैट कि मोड डज नॉट एग्जिस्ट. मोड डज नॉट एग्जिस्ट बोला था बेटा मैंने, बोला था मैंने, बोला था. बेटा मोड का कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है. एग्जिस्ट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें हम लोग कुछ कर सकते नहीं है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट सब लोग बराबर नाक खोल के सुनो. इफ द गिवन डेटा इज 7, 9, 10, 12, 10, 14,
16, 18, 22, 18, 25. बताओ व्हाट इज द मोड? व्हाट इज द मोड? मैं देख रहा हूँ तू अभिशंकर आंसर नहीं दे रहा है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अभी अभिशंकर, अभी धाप धाप के तूने आंसर 10 एंड 18 बोला है अभिशंकर। अरे क्या बोलना चाहता है? क्या हो गया कीबोर्ड को? मैं देख रहा हूँ धवल कृष्ण पुजारी, तू धप के आंसर बोल रहा है वहां पे। यहाँ पे दो वैल्यूज बड़ा रिपीट हुए थे। एक था 10 और दूसरा था बड़े 18। इसीलिए यहाँ पे झूठे, मेरा कीबोर्ड चल रहा है यहाँ पे। In that case, there are two values, madam. One is a 10, another one is 18, madam. बड़ा जिसने आंसर मुझे खाली 10 बोला है और जिसने बड़ा खाली मुझे आंसर 18 बोला है, मैडम, प्लीज मेंटेन बेटा 2 मिनट साइलेंस फॉर देम। लिप्सा, अक्षित अय्यर, यू आंसर्स आर रॉन्ग। योर आंसर्स आर रॉन्ग। और ये देख लो फिर से, मुझे चुभा है यहाँ पे, चुभा है मुझे यहाँ पे फिर से। दो जन ने आंसर रॉन्ग दिया है मुझे। There were two values which were been repeating, madam. One was 10 and the other one was 18, madam. सॉरी सर, नहीं लिप्सा, मुझे चुभा तो मैं तुझे भी चुभाऊंगा अभी यहाँ पे। चल, अब यहाँ पे तुम लोग को शायद पता भी नहीं चला होगा madam, कि यहाँ पे मैंने चार मेथड में से एक मेथड बड़ा यहाँ पे यूज भी कर लिया है और तुम लोग को किसी को पता भी नहीं चला है। तीन क्वेश्चन के जो तुम लोग ने मुझे आंसर्स दिए मैडम, उसमें तुम लोग ने एक मेथड यूज किया है। चलो बड़ा, सब लोग एक साथ बोलो, हम लोग ने कौन सा मेथड यूज किया है? दिल से बोलो। अरे बच्चे बोले। वेरी गुड। तेजल, मैं देख रहा हूँ तू धप धप के आंसर बोल रही है। सबसे पहले तेरा आंसर आना चाहिए वहां पे। दिशा,
तो आराम कर बेटा। हाँ, मैं लोरी कर रहा हूँ, सो जाए वहां पे, मस्त पंखा नीचे सो जा, आंख बंद करके। कुसुम જોઈ રહ્યો છું, આન્સર નથી આપી રહી તું। कुसुम, चल चल, अनुष्का आंसर बोलते रहे ना। अनुष्का पाटिल, तो तेरा सीक्रेट ओपन कर दूंगा मैं, तेजल को। बोलू, क्या किया था तूने? बोल दू? चल, तूने और नियति ने मिलके क्या किया था? चल चल, ठीक है, आंसर देते रहे। नियति आंसर बोल। नेक्स्ट, देवाशीष, कुंज, मनो, आंसर देते रहो सब मुझे। चलो नेक्स्ट। अब तुम लोग बड़ा की पॉइंट्स वहां पे लिख सकते हो सब। Right on first point, mode is defined. Mode is defined to be as that value of a variate. Mode is defined to be as that value of a variate which repeats for maximum time. Mode is defined to be as that value of a variate which repeats for maximum time. Second point, mode is considered to be as the simplest average. Mode is considered to be as the simplest average because it is easy to calculate. Because it is easy to calculate. Next point. Next point. Mode is mode is not considered to be as unique. Mode is not considered to be as unique. Is not considered to be as unique because number one, mode it may or may not exist. Mode it may or may not exist. Number two is whenever mode exists, it may have more than one value. It may have more than one value. Next point. Mode cannot undergo
for the further mathematical treatment. Mode cannot undergo for the further mathematical treatment. Mode cannot undergo for the further mathematical treatment. Next point, mode is not considered to be as a good average. Mode is not considered to be as a good average. Mode is not considered to be as a good average. Next point, mode can be represented. Mode can be represented graphically. Mode can be represented graphically by using histogram. By using histogram. By using histogram. Next, mode can be obtained. Mode can be obtained by using mode can be obtained by using four methods. By using four methods, and they are mode can be obtained by using four methods, and they are number one, inspection method. Number two, method of grouping. Number three, empirical relation formula, या तो empirical relation method. एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ. Empirical empirical relation method. Empirical relation method. And number four is formula method. Number four is formula method. चलो रेडी. जिसमें से जो सेकंड मेथड है बेटा, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, उसको बेटा आगे पेंसिल से क्रॉस कर दो. क्रॉस दैट बेटा, because it is not there in our syllabus. Because बेटा it is not there in our syllabus.
चलो धवल, but it is compulsory कि mode is represented only by using बड़ा histogram. हमारे पास और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है मैडम. There are no any other graphical representations which can be used for representing mode. ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है कि mode will be represented only by using histogram. Okay, so next part. And now after completing this all part, चलो write down A. In margin but you will write down A. And in that but you will write down A is called to be as raw data. A is raw data which is called to be as individual observation data, or it is called to be as ungrouped data. चलो रेडी हो बेटा सब लोग रेडी हो स्टार्ट करें बेटा सब लोग. तो बेटा with respect to raw data, बेटा there does not exist any formula. There does not exist any formula. Mode, it can be obtained directly by using the method of inspection. By using the method of inspection. So in that case, you can write down. In that case, you can write down. Write down mode. Next time, write down mode is defined to be as. Mode is defined to be as. Is defined to be as that value of a variate. Mode is defined to be as that value of a variate which repeats for maximum number of times which repeats for maximum number of times which repeats for maximum number of times. Raw data gets overruled. Chalo, next. There comes what a B, which is called to be as frequency distribution data, which is called to be as frequency distribution data. And we know that the frequency distribution data, they are of two types. They are of two types.
Number one, ungroup data with frequency.